Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. Today we will discuss question number 13. The basic idea in this question is to find out manufacturing cost, total manufacturing cost per unit. The most important thing which will be discussed in this question is we are given work in process ending inventory estimate given by the manager. That is not complete. Value of FOH is missing. So we have to find out value of FOH. Material, work in process material given, work in process labor given, and then we will calculate by ourselves work in process FOH. And by adding work in process FOH, we will complete the estimate of work in process closing inventory. This is the most important concept which is discussed in this question. That is something new in this question, okay. And other than this, all the things are same which have already been discussed in the last question. Okay, now today we see what are the data given in the question and how to handle that data. Following information relating to the operations of Al Shakur Industrial Company Limited for the month ended June 30th, 2021 are provided to you. Manufacturing cost for the month, direct material cost is given 90,000, direct labor cost is given 72,000, factory overhead cost is given 54,000. Inventories, opening inventory of work in process nil, whereas closing inventory of work in process on June 30th, 2021, 140 units. Value is not given. We will calculate by ourselves. This is the core concept which is given in this question. Finished goods, opening inventory 280 units with a cost of 32,400 given. In the closing inventory of finished goods, 240 units are given but the cost is not available. Okay, we will find out it by ourselves. During the month, the company sold 1,000 units. The production manager of the company has submitted the following cost estimate for the closing work in process inventory. Direct material cost is 8,100, direct labor cost is 3,600. The company's past experience showed that factory overhead cost fluctuates closely in proportion to direct labor cost. This is the key point which will be helpful for completing the manager's estimate regarding, production manager's estimate regarding closing work in process inventory. The company's past experience showed that factory overhead cost fluctuates closely in proportion to direct labor cost. Okay. The requirement is number 1, determine number of units manufactured during the month. Number 2, complete the production manager estimate of the cost of work in process inventory. The third requirement is prepare a manufacturing statement for the month. The fourth requirement is determine cost of each unit manufactured during the month. And the fifth requirement is determine ending inventory of finished goods. Assume that the first cost recorded in the finished goods account is the first cost to be credited to the account. And the last requirement is calculate cost of goods sold. So these are the requirements. Now we will move towards the solution of the question which you will see on the screen. And we will discuss one by one all the requirements. The first requirement is number of units manufactured. As we have discussed in the previous question, that if you want to know the number of units manufactured, first of all you will see the number of units sold. You sold out 1,000 units. Then you will add number of units in closing finished goods inventory, 240 units. So it means that 1,240 units were available for sale. You will deduct 280 units which came from the last year. Units in the opening inventory of finished goods 280. इसको माइनस कर देंगे and units manufactured are 960 units. You have understood this point. This is so simple as it has already been discussed in our question number 12. Now we see the requirement number 2, estimate of work in process closing inventory. We have given two values. Direct material used in work in process closing inventory, that is 8,100, plus direct labor cost given 3,600, but factory overhead cost is not given. So we have calculated it in our supporting work number 1.
मैं अब आपको सपोर्टिंग वर्क एक्सप्लेन करूंगा कि सपोर्टिंग वर्क हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, और उसके बाद हम दोबारा इसी पॉइंट पे आएंगे। यू सी सपोर्टिंग वर्क आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसने क्वेश्चन में जो है बता रखा था, जब हमने क्वेश्चन जो है जी रीड आउट किया, कि जो FOH है दैट क्लोजली फ्लक्चुएट्स विद डायरेक्ट लेबर कास्ट। जो जो डायरेक्ट लेबर कास्ट चेंज होती है, FOH कास्ट भी उसी रेशियो से चेंज होती है। वी सी दैट इन द क्वेश्चन वी आर गिवन डायरेक्ट लेबर 72,000 and factory overhead 54,000. We establish a ratio in these two values, 72,000 रेशो 54,000। इसको हम जब मैथ के रूल के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 रेशो 54, 12 रेशो 9 और सिंप्लीफाई करेंगे 4 रेशो 3। डायरेक्ट लेबर और FOH के अंदर जो रेशो पाई जा रही है वो 4 रेशो 3 है। यानी अगर डायरेक्ट लेबर ₹4 होती है तो FOH की वैल्यू ₹3 होगी, और अगर डायरेक्ट लेबर की वैल्यू 36 होती है तो FOH की वैल्यू क्या होगी? दिस इज X। यू नो X इज अननोन वैल्यू। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर 3600 की डायरेक्ट लेबर है। अगर डायरेक्ट लेबर 4 हो तो FOH 3 होती है। अगर डायरेक्ट लेबर 3600 हो तो X की वैल्यू क्या होगी? By cross multiplication 4x is equal to 10,800. 4 multiplied by x, 4x is equal to 3 multiplied by 3600, 10,800, and x is equal to, अब 10,800 will be divided by 4, it comes ₹2,700. This is the value of FOH. X means FOH. अब इस वैल्यू को हम वापस जाकर अपनी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर इस वैल्यू को प्लेस करेंगे। FOH को डायरेक्ट मटेरियल गिवन 8100, डायरेक्ट लेबर गिवन 3600, फैक्ट्री ओवरहेड एज पर आवर सपोर्टिंग वर्क नंबर 12700, इन सब का टोटल करेंगे एंड वी गेट 14,400। दिस इज द टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। हमने प्रोडक्शन मैनेजर के एस्टिमेट को जो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के हवाले से था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी 14,400 आ गई। Now we move towards requirement number 3. Requirement number 3 is cost of goods manufactured statement. Again हम 3 लाइन की हेडिंग देने के बाद जो वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कैलकुलेटेड क्वेश्चन के अंदर दी गई है 90,000 उसको लिखा गया। इसमें डायरेक्ट लेबर कास्ट 72,000 को ऐड किया गया, प्राइम कास्ट मिल गई 1,62,000, इसमें FOH को ऐड किया गया जो कि एक्चुअल FOH क्वेश्चन में गिवन है 54,000, टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई 2,16,000। ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस वाज निल। ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है कि ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि एक स्टेप क्यों इसमें स्किप किया गया है। तो इसमें इसकी वैल्यू निल। कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 2,16,000। क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस 14,400 जो हमने खुद कैलकुलेट किया है 14,400 इसमें से माइनस हो गई। वी अराइव एट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दैट इज 2,01,600। इसके साथ हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। नाउ वी सी आवर रिक्वायरमेंट नंबर 4 दैट इज कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। फॉर्मूला इज सो सिंपल, कास्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड divided by number of units manufactured. Cost of units manufactured is 2,10,600 divided by 960 units. Answer comes to ₹210 per unit. Now we see requirement number 5, cost of finished goods inventory on 31st July. We know that the number of units in closing inventory are 240 multiplied by ₹210 per unit, and we will get 50,400. This is the value of closing inventory of finished goods. और इसके बाद हम अब रिक्वायरमेंट नंबर 6 की तरफ जो है मूव करेंगे, दैट इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यू पीपल नो कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,01,600 में ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की 32,400 ऐड करेंगे। We will get cost of goods available for sale 2,34,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की माइनस करेंगे 50,400 and we will get cost of goods sold that is 1,83,600।
सो हमने सारी की सारी 6 रिक्वायरमेंट को अटेम्प्ट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम regarding any requirement or any point, please feel free to contact me. Wish you all the best. Thank you so much. Hope to see you in my next lecture.